Pragya, images now coming in. All right, finally that flight has landed. Nitish Kumar, and that means along with Nitish Kumar, Tejasvi Yadav has too now landed in Delhi. Of course, both leaders, former partners, former Deputy CM of Bihar and current Chief Minister of Bihar. Nitish Kumar right now we are told as a major individual because he is the man who holds the key and he is the man of the moment as we talk about Nitish Kumar. He is now making his way in at the Delhi airport. You can see that is the crowd, the rush of the media personnel and also the security there. But Tejasvi Yadav, who was sitting right in the row behind Nitish Kumar in that same flight, of course, had raised several speculations. Isha is with us right now. Isha, Nitish Kumar, and also that means Tejasvi Yadav, both of them have landed. The destination was same, Delhi, but from here on, the two will take different routes. So a lot of movement here at the Indira Gandhi International Airport. Nitish Kumar, the Bihar Chief Minister, has just exited. In fact, he was surrounded by a lot of people from Bihar as well. In fact, you can still see that his security is still currently here. He has left from the airport, refused to speak to the media. But the speculation when it comes to Nitish is extremely high because if he does plan to take the offer of the India Alliance, he can prove to be kingmaker at the moment. But he has left from the airport without really saying anything about his future plans. That is also imperative to note. The fact that, and also what is imperative to note is that Tejasvi and Nitish were in the same flight. However, Tejasvi Yadav has not come out. In fact, this is the gate where we're also expecting Tejasvi Yadav to walk out from. Keep an eye out, Isha, because if Nitish Kumar has come out, then Tejasvi Yadav is likely also to. But these are the exclusive pictures that we are playing out because today is the key NDA meeting and Nitish Kumar and also Chandrababu Naidu, both of them will hold a key position there as far as when it comes to the NDA Sarkar forming the government at the center. But remember, it was Nitish Kumar himself, the man who was earlier part of the NDA, left NDA, went to the India Bloc Alliance, in fact was the man who spearheaded when it comes to the formation of the India Bloc Alliance. It was Nitish Kumar who went to each opposition partner to meet them, to bring them on the same platform, and that is how India Bloc was formed. But thereafter, with a lot many differences, Nitish Kumar decided to walk out. He joined the NDA. He was part of the NDA. Several rallies that was done in Bihar. He was seen alongside Prime Minister Narendra Modi. Apparently, they also made an understanding, took a vow that till the time he lives, he continues to be a part of the NDA. But right now, this is politics and such has been the situation. That has now changed. However, it has not completely tilted in the favor of BJP so that it has a brute majority at the center on its own. We have Tejasvi with us right now as well. Tejasvi. And also we have Isha with us who continues to be with us right now because he did not answer any questions. Isha. Lot many reporters there. Of course, he is the man that will hold the maximum amount of answers if he is standing firm with the Modi Sarkar or not. Yes, Amita. In fact, Nitish, while also exiting, he just uttered 3 words, and he said, "Sarkar to banegi hi." That is all he said. In fact, he was asked multiple questions about which side he's alleging to, but he did not mention anything. The only thing he said was "Sarkar to banegi," and he left from here. But what is imperative to note is that Nitish Kumar is one of the founding members of the India Alliance. In fact, he was the one who started meeting all the opposition leaders and brought them all together under the same roof and under the same banner, which is now India Alliance, which has emerged successfully. So that has come to the fore. But today, it is extremely important as to what... लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। चलिए
Very interesting. However, as far as Tejasvi Yadav, of course, being on the same flight en route Delhi, he too has landed. Nitish Kumar has just made his way out of the Delhi airport. Tejasvi Yadav, when he was questioned on exactly what happened in that 2-hour-long flight duration, where Nitish Kumar and Tejasvi Yadav were almost seated together. And Tejasvi Yadav said that दुआ सलाम हुई और कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या. So the suspicion here, the suspense rather, still here continues, even on part of Nitish Kumar. When he came out of the airport, he said, Sarkar to banegi hi. Now that could go either way. Sarkar to banegi hi. Is it Modi Sarkar? Because this time around, he is expected to be a part of the NDA meeting that is taking place today. So lot of movement that is now happening at the Delhi airport, because Delhi has now become a beehive of activity. On your left, Tejasvi Yadav. On your right, Nitish Kumar. Both of them on the same plane. As far as देश के लोगों ने सरकार को बचाने के लिए मत किया, और जो तानाशाही रही है मोदी जी, उनको सबक सिखाया गया. देखिए, इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है, वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता. वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है. 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं किया, तो जनता ने उनको सबक सिखाया. तो हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं. 6 बजे हम लोगों की बैठक है, और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी देखिए. अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है. कोई बातचीत हुई. All right, Tejasvi Yadav saying that sabak sikhaya hai जनता ने as far as to Modi Sarkar and to NDA is concerned, but saying not much if there was any interaction that happened en route when both of those leaders, when it comes to friends turned foes, if we can call them, as part of the same India bloc. Of course, Nitish Kumar is the man who formed, who's the brain behind the India alliance, but he left the India bloc to join the folds of the NDA again. But we have Pragya and Amit, both of them joining us live, because Amit, अगर सस्पेंस की बात की तो अभी भी लगातार बना हुआ है. नीतीश कुमार बाहर आते हैं, वो कहते हैं सरकार तो अब बनेगी ही. किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा. वहीं पर तेजस्वी यादव बाहर आकर ये कहते हैं कि जहां तक हमें नहीं पता है कि क्या हुआ है, दुआ सलाम हुई है, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या. तो सस्पेंस यहां पर अमित अभी भी बना हुआ है. जी हाँ, निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है सस्पेंस को और थोड़ा बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार. हालांकि नीतीश कुमार ने कल जब बात हुई है तो उन्होंने समर्थन की बात कर दी है कि वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को समर्थन करेंगे, उनके साथ है, उनके साथ रहेंगे. लेकिन जिस तरह का बयान है वो कुछ बयान उसी तरह का है कि जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा, पर कौन बनाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा और आप कहां होंगे, ये उन्होंने नहीं खोला. लेकिन ये शायद उनके बोलने का तरीका होगा, और मुझे लगता है कि वो चाहते भी होंगे, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद वो उस भूमिका में है जब उनको उस तरीके से पूछा जा रहा है जहां पर कहा जा रहा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में है, और जो भी सरकार होगी उसमें महत्वपूर्ण जो फैसले हैं सरकार बनने को लेकर, गठन होने को लेकर, वो लेने वाले हैं. तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर आप सरकार बनाने वाले हो, सरकार बनाने में भूमिका निभाने वाले हो, तो आप चाहेंगे कि ये सस्पेंस बना रहे ताकि आपकी भी अहमियत बनी रहे. लेकिन अभी मैं 7 LKM में हूं, जो कि प्रधानमंत्री आवास है, और कहा यह जा रहा है कि 3:30 बजे के आसपास सब लोग जो एनडीए के सहयोगी है वो यहां पर आना शुरू कर देंगे. थोड़ी देर पहले हालांकि अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें जो 17वीं लोकसभा है उसको भंग करने की सिफारिश जो है उस पर मुहर लग गई है, और जिसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और नई सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. तो एनडीए के सब लोग के आने की जो एक वो है शुरुआत हो चुकी है तमाम, और नजरें जो है सिर्फ 2 नेताओं पर हैं. वो एक है नीतीश कुमार और दूसरे जो है वो चंद्रबाबू नायडू, जो करीब 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं, और इसके बाद वो सीधे पहले अपने घर जाएंगे फिर यहां पहुंचेंगे. तो लगभग देखिए तस्वीर साफ है, लेकिन थोड़ी धुंधले बादल हैं,
जो मुझे लगता है 1:30 बजे के बाद छटेंगे, 3:30 बजे के बाद छटेंगे, जब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत सभी लोग। और ये भी जानकारी है कि उस बैठक में जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो अपना समर्थन पत्र जो है वो भाजपा को, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। ये जो पूरा माहौल है ये बनने वाला है। हालांकि आज की बैठक में ये भी तय होगा कि जो संसदीय दल की बैठक कब बुलानी है, क्योंकि एक परंपरा होती है कि संसदीय दल की बैठक बुलाएगी जिसमें एनडीए के तमाम सांसद होंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और इसके बाद पूरे संसदीय जो दल के जो प्रमुख नेता होंगे या जो अलायंस के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ राष्ट्रपति भवन जाकर नई सरकार के फॉर्म करने के लिए उनको प्रस्ताव दिया जाएगा कि हाँ, हम सरकार गठन करना चाहते हैं, क्योंकि समर्थन हमारे साथ है, नंबर्स हमारे साथ है और बहुमत भी हमारे साथ है। तो उसकी शुरुआत आज कह सकते हैं कि एनडीए की बैठक में होगी।